Yeah. Good afternoon, everyone. Am I audible to you? Yes. Yes, right. Yeah. If there is any issue with the internet, just mention. Okay. Because I might not be able to verify at my end. कुछ हुआ तो बता देना. ठीक है? Just a minute. ठीक है? हर्षा ने कुछ पूछा. Why do we replace circular coil by by rod of length 2r? Why not two rods of length 2r? Considering it to be made of two semicircular coils. मतलब circular coil हो गया. Replace it with a rod of length 2r. ठीक है. Circular coil के लिए. Circular coil के लिए cannot replace it. Why not two rods of length 2r, considering it to be made of two semicircular coils? कौन सा क्वेश्चन बेसिक बता दो. This is my concern. First of all, we'll discuss questions of 6.1 and 6.2. 6 है ना, 6 chapter में. तो कोई डाउट है 6.1 and 6.2 में, you can ask, get them clear.
Then are going to the next part. पहले 6.1 में examples and this इसमें कोई doubt है? Examples and the checkpoint questions. कोई doubt है किसी को? We did clarify now itself. 6.19 example. So 6.19 is 6.19 example देखो एक बार. First example the goal classroom, right? Just a minute. The 6.1 and 6.2 will be discussed now. They will not be discussed again. Okay. Just a minute. एक minute. अब देखते हैं ना वो 6.19 example, right? लोड होने दो तब तक. 6.19 में 19 और 18 हर्षा. One eight or 19? 19. Look at the screen. If it's question number 6.19, question क्या है यहाँ पे? Through a uniform magnetic field, a small rectangular loop is moving towards left with constant velocity v as shown in the figure. Counting of time begins at the moment the loop starts entering the field. Plot the variation of the flux through the loop with respect to time. ठीक है? So यहाँ पे we need the variation of flux. ठीक है? So take this. At any point of time, we'll try to, first of all, at any point of time, we'll try to get the flux. ठीक है? जैसे clear हमने, जैसे rectangular loop मान लो, rectangular coil, ठीक है? Rectangular coil. Let's suppose at some point of time it is ऐसे कुछ है, मान लो कि this much of length or the x length
is inside the field. ठीक है, x length is inside the field. उसका breadth और width जो भी है उसका thickness मान लेना, I'll call it as b. जहाँ पे flux क्या होगा, the flux at this instant of time will be equal to what? Will be equal to the magnetic field. b bar dot a bar करना होगा. The magnetic field, I think it is inverse. Right, area vector भी inverse ले सकते हम, inverse or outwards कैसे भी ले लो. If we take it as inverse, we'll get it as positive, so we'll take it as inverse. Now what area is inside the field? Only this area is inside the field. So b bar dot a bar हमें directly b a मिल जाएगा, theta is 0, so cos theta is 1. Right, capital B into small b into x. अब इसमें can I say that x is equal to vt? I think velocity is constant here. So is x equal to vt? The rectangular coil is moving towards left with velocity v, a constant velocity v. So is x equal to vt? तो फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल B स्मॉल b into v into t. ये कब तक होगा ऐसे, जैसे मान लेना फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल B स्मॉल b and v are constants. So flux will be equal to k into t. Yes, ये होगा ना, flux will be equal to k into t. समझ आया ना? So this represent which graph here? Flux versus time मतलब कौन सा ग्राफ होगा? Straight line passing through the origin because it is in the form of y is equal to mx. ठीक है? So if I draw the graph here, initially you'll get a straight line. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. That's the first case. अब क्या होगा? After some time, the coil will be completely inside. ठीक है, पूरा अंदर हो गया वो. Now once it is completely inside, even if it moves towards left, will its flux change? Even if it moves towards left, will its flux change? Yes or no? Even if it moves towards left, will its flux change? Ultimately, magnetic field is uniform. इसका area भी constant होगा. Right, मान लेना यहाँ तक पूरा between these two dotted lines there is field. ठीक है? तो यहाँ पे at this position, at position 1 or at position 2, the flux is the same, it's not changing. Right? The flux change है और नहीं होगा. And so the flux remains constant for some time. समझ आ रहा है ना सबको? Is clear, right? Flux remains constant for some time, so constant. And वापस कभी ना कभी बाहर भी तो निकलना होगा उसको. It also have to exit again, right? You look at the diagram, जैसे यहाँ पे. देखो, look at this diagram here. I'll share it with you. कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे?
the rectangular coil will come here, इससे बाहर भी निकलने लगेगा. When it starts coming outwards, इसका जो velocity है will decrease or not velocity, इसका जो flux है, the flux will decrease or increase. What will happen? The flux will decrease. And equation भी कैसे मिलेगा हमें? We'll get a straight line जैसे उस केस में मिला हमें फर्स्ट केस में. Yes. फ्लक्स नेगेटिव क्यों होगा? तब भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है एंड एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ लिया हमने, तो फ्लक्स नेगेटिव क्यों होगा? इतना पार्ट के लिए ये एरिया कंसीडर करना होगा हमें और कुछ नहीं, तो फ्लक्स पॉजिटिव ही रहेगा. Why will it be negative? कौन सा वीडियो देखो, जहां पे भी देखा तुमने वो गलत ही होगा. Flux versus time. Initially it will increase, then constant, and then it will again decrease. वो decrease भी कैसे होगा? It will be in a straight line. ठीक है? समझ आ रहा है ना? इसमें ये कहाँ से आ गई है रॉड? And that was not this case, right? वो तो complete अलग case था. It was going towards left or going towards right. दोनों case था. ठीक है? समझ आया ना? And second part, slope will be negative. ये ग्राफ किस किस के बीच में? Respective time. यहाँ पे the total length is L. And अगर ये मान लूँगा, let's suppose this is X. Then flux क्या होगा? तो first of all flux क्या होगा? ठीक है, flux ले लेंगे. Magnetic field into area. Area क्या होगा? It will be equal to B तो रहेगा B into L minus X. That only consider the area for which there is a flux. There is a magnetic field. So capital B small b into L minus capital B small b into X. देखो ये तो constant होगा. This is one constant. C minus capital B small b into X. वो क्या होगा? capital B small b X मतलब BT लिख सकता हूँ वापस. टाइम का वेरिएशन हो जाएगा, बट टाइम इंटरवल मान लेना. तो फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे मिलेगा? अगेन स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप तो नेगेटिव है, माइनस साइन. देखो ठीक है, समझ आया ना सबको? It will increase and again decrease. So it will increase, becomes constant, then decrease. ठीक है? We'll get the same graph for flux versus X. Flux versus X मतलब what is X in that case? वो भी मैटर करेगा ना, what is X? Distance travel. X is distance travel, then हाँ same graph मिलेगा. ठीक है? Then 6.1 में और कोई डाउट है? Examples or anything? Answer, you need answers to exercises. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Second part of question है, एक और भी पार्ट है क्या? कौन सा पार्ट है? It is for the EMF. ठीक है? EMF के लिए हमें करना होगा. Then flux का तो ग्राफ मिल गया हमें, flux versus time. Right, flux versus time graph मिल गया हमें. Then E is equal to minus n d phi by dt. Assuming that n is equal to 1, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? E is equal to minus d phi by dt.
So for the first part is the flux increasing or decreasing, flux is decreasing. So d phi by dt here according to this graph will be slope of tangent in phi t graph. क्या हो जाएगा? It will be equal to d phi by dt, right? So for the first part, when the flux was increasing, d phi by dt was positive or negative? फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, या सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट. The first part is the slope d phi by dt positive or negative. d phi by dt EMF का नहीं पूछता हूँ. I'm asking about d phi by dt itself. टेंजेंट देखो, टेंजेंट का स्लोप क्या है वो देखो, पॉजिटिव. तो d phi by dt is positive, तो EMF जो है नेगेटिव होगा. और 1 d phi by dt is positive, so EMF is negative. And constant है क्या? Is a slope constant for the first part? Yes, slope constant है क्या? And constant. ठीक है. देखो पूरा यहाँ ओरिजिन से लेकर सपोज until A, स्लोप तो कांस्टेंट है ना, एक ही टेंजेंट है ना, पूरा स्ट्रेट लाइन है ना. स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगा? स्लोप at each and every point will be constant. Right, so for one, slope is constant. ठीक है. तो स्लोप कांस्टेंट मतलब d phi by dt कांस्टेंट, तो EMF भी कांस्टेंट ही होगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट. ठीक है. तो फिर गो फॉर द ग्राफ. ठीक है, ग्राफ अगर ड्रॉ करो, अगर ये EMF हो गया, EMF वर्सेस टाइम. फर्स्ट इज EMF हमें नेगेटिव मिलेगा फॉर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है. देन फॉर द सेकंड पार्ट, अगर द फ्लक्स ग्राफ सेकंड पार्ट में फ्लक्स इज कांस्टेंट, d phi by dt क्या होगा? d phi by dt क्या होगा? It will be 0. So first part, second part के लिए EMF is 0. थर्ड पार्ट के लिए d phi by dt नेगेटिव और पॉजिटिव. थर्ड पार्ट के लिए d phi by dt नेगेटिव, so EMF जो है वो पॉजिटिव होगा. The graph will be something like this, right? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, देन कुछ टाइम के लिए 0 होगा, एंड देन यहाँ yes, and इन दोनों का जो वैल्यूज है they will be the same. ठीक है. एंड वो भी EMF का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे बता दो. EMF का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू द कैपिटल B स्मॉल b इनटू b. EMF फ्लक्स नहीं, कैपिटल B स्मॉल b इनटू b, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे the first part यहाँ पे I can just consider that there is this rod AB which is moving, यानी ये rod मान लेना, that's a rod which is moving towards left in a magnetic field. यही है ना? For the first part EMF के लिए ये कंसिडर कर सकते हो ना, this rod is moving in a magnetic field. तो तब EMF इंड्यूस क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबके सब परपेंडिकुलर हो गए, सो इट इज BLV, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड यहाँ पे इज स्मॉल b. ठीक है. आया समझ में सबको? क्लियर, राइट? The same thing happens when it is going out also. तो बाहर जा रहा है ना, तब इस रॉड में क्या हो जाएगा? EMF इंड्यूस्ड होगा. यहाँ पे मैं येलो करके शेड कर रहा हूँ.
वो दिखाई दे रहा है ना येलो वाला पार्ट. If I'm not good with color combinations, अगर if anyone is good with color combination बता देना कि दूसरा कलर यूज करना है. राइट, सो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? सेम कैपिटल बी स्मॉल बी वी. यस, I have to use green color instead of yellow. Okay, try करना. ये बेटर है क्या ग्रीन कलर? ग्रीन बेटर है या येलो? येलो बेटर. ग्रीन और येलो. ग्रीन ठीक है, बहुत ग्रीन. समझ आया ना सबको? देन और किस में डाउट है? 6.1 एग्जांपल्स एज वेल एज स्टेटमेंट. पहले एग्जांपल्स में पूछो. एग्जांपल्स में 21 एग्जांपल्स. अगर एग्जांपल्स में कोई डाउट नहीं है तो नॉट डिस्कस इट अगेन. कोई डाउट है एग्जांपल्स में? पहले 6.20 and there are good examples in DC Pandey, right? Look at 6.20. What do we have here? Question क्या है यहाँ पे? So, which one is the question? Which one is it? Okay. अब देखो यहाँ पे 6.20. मतलब ग्रीन अच्छा लग रहा है क्या आपको? येलो अच्छा लग रहा है क्या? ग्रीन या येलो? ग्रीन इज मोर विजिबल. दिखने के लिए तो अच्छा होगा बट आई थिंक ग्रीन इज मोर विजिबल. यस, green is more visible when compared to yellow. I'll go with green. एक मिनट, I think. अच्छा, even I'll do that. Okay, class के बाद. Where are we? Example 6.20, right? Green. I think green is better when compared to blue. Blue तो ये हो गया. Blue and green में which is better? I think green better है. ठीक है, जो भी चलेगा. See, we have a conducting coil. यहाँ पे question देखो. Through a conducting coil along its axis, a short bar magnet is rapidly pulled with uniform velocity. ये हमारा पहले main important point है. It's uniform velocity. With its north pole entering the coil first. ठीक है. Plot the variation of flux, induced current, and power dissipated in coil with time. So this is what we have to do. ठीक है. So तो इन्होंने शॉर्ट बार मैग्नेट बोला है यहाँ पे. तो
So for short bar magnet, we know what will the values be and all. I'll be going with an approximation. Okay. आपको लग रहा होगा सर डिस्टेंस तो छोटा हो जाएगा and all, but I'll just go with the approximation. देखो इन्होंने डायग्राम भी दे दिया यहाँ पे. This is the coil. यहाँ पे एक मैग्नेट है. North pole is entering first. Well, with a constant velocity, I'll call it as V. Right? ये है ना क्वेश्चन में. Yes. Now we have to go with flux. Wait, ये जो answer है, this is just an approximation. Okay? When you go with flux यहाँ पे, flux is obviously V bar dot A bar. ठीक है? अब यहाँ पे area तो constant ही होगा. The variable will be in terms of the magnetic field. Okay. So at a point on the axis, अगर ये distance x हो गया दोनों के बीच में, ठीक है? तो at the center तो हम directly बोल सकते हैं ना, the center, the field is what? At the center, the field is mu0 by 4 pi into 2m by x cube. This is at the center. But अगर कोई और point लिया तो जैसे यहाँ पे एक point P लिया, at that point it will be something else. Yeah, well, it will not be equal to this formula, but it will be inversely proportional to x cube. Magnetic field जो है, it will be inversely proportional to x cube. Obviously, it will also depend on the angle theta. जो angle जो theta है, उसके ऊपर depend करेगा वो. But ultimately, magnetic field जो है, it will be inversely proportional to x cube. Yes or no? समझ आ रहा है ना आपको? ठीक. पहले हमें क्या चाहिए? We need flux through the coil. Flux through the coil के लिए एक्साइटेस्टिक हमें क्या करना पड़ेगा? Integral dB bar, sorry, B bar dot dA bar or ds bar. ds bar will represent the area vector. ठीक है? अगर सेंटर पे लिया हमने, और center of the coil is on the axis of the magnet, तो वहां के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. B is equal to mu0 by 4 pi into 2 pi 2m by x cube. M will refer to the magnetic moment. And अगर यहाँ पे point P लिया, so what is this point P? जैसे if this is a magnet, यहाँ पे एक point P हो गया. The angle made with the magnetic moment is, let's suppose, theta. Then at that point P, what will the magnetic field be? अगर डिस्टेंस r हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा? It will be equal to mu0 by 4 pi, I think 4m आएगा, mu0 by 4 pi m by x cube into 1 plus under root of 3 cos square theta. Yes, याद है आपको? This will be the formula. Yes, magnitude के लिए यही होगा ना? So it depends on theta as well as r, not x but r. It also depend on theta as well as distance. दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा. Yes? Yes or no? नहीं, तो यहाँ पे when we go for the flux through the coil, तो भाई हर किसी पॉइंट पे अलग अलग फील है. यहाँ पे तो now to integrate and look at the answer, but again वो इंटीग्रेशन इस केस में काफी मुश्किल हो जाएगा. It will be very difficult. तो हम क्या कर सकते हैं अगर वो मुश्किल लग रहा है तो? Ultimately we can go with an approximation. देखो ये वाला केस पे देखो, when at an angle theta, तब भी magnetic field जो है, it is inversely proportional to r cube, inversely proportional to the cube of distance, right? तब भी वो केस है ना. So we'll go with an approximation because if it's a short bar magnet, and we'll go with approximation.
B is inversely proportional to x cube. ठीक है, वो तो हम बोल सकते हैं ना, that B is inversely proportional to x cube, right? समझ में आ रहा है ना सबको? ना जैसे बार मैग्नेट जो है वो पास आता रहेगा, will the flux increase or decrease? As the magnet keeps coming close to the coil, will the flux increase or decrease? Increase होगा. And then as it starts going away, then क्या हो जाएगा? Then it will decrease. ठीक है? Increase होगा, then decrease होगा. समझ आ रहा है ना सबको? Yes. ठीक है? If it's that case, अब बाकी वो जो ग्राफ दिया, एडजस्ट कर दिया. पहले increase होगा, and then decrease. Basically, it will extend to infinity वाला होता है. ठीक है? Flux versus time देना है. Exactly 0 से चालू नहीं होगा, but similar graph. We'll have a symmetrical graph तो होगा. ठीक है? This flux versus time पहले increase होगा and then decrease होगा. One thing is I'll get क्या मिलेगा, हमें एक curve तो मिलना चाहिए because inversely proportional to x cube, so it won't be what? It won't be a straight line. तो ये time कहाँ से आएगा? Time इसमें से आएगा. X depends on time. You can say that x is equal to distance minus VTS. ठीक है? X depends on time उस equation में आ जाएगा. ठीक है? Exactly इसी शेप पे ग्राफ कैसे मिलेगा? It's out of scope for us. But हम ये तो बोल सकते हैं कि it increases and then decreases. इतना बोल सकते हैं. Clear? And which is bx cube constant. Bx cube is not actually constant. Not x cube. Theta के ऊपर भी depend करेगा वो. It can't be constant literally speaking. Okay. But we'll have to go with the approximation. We'll not have any other choice. Okay. Exact method will involve complex integration. कर सकते हैं, take a ring and all, but थोड़ा complex हो जाएगा, lengthy भी हो जाएगा. That's not required for us. ठीक है? We can't plot. Okay. Plot कर सकते हैं, but हमें पूरा integrate करके करना होगा. So we're not going into plot. It's like मान लें कि just trying to figure out कि हाँ ऐसे graph this is possible or not, and this is possible. ठीक है? Plotting the graph will become difficult. पूरा flux निकालना मतलब we have to integrate and look at it. तो मुश्किल होगा. ठीक है? So we're not going to plotting the graph. ठीक है? Just have to go with कि this it's not a straight line, curve आना चाहिए. Increases and then decreases, maximum reach करेगा. ठीक है? Obviously यहाँ पे ग्राफ भी ऐसे होना चाहिए. If it's coming from infinity, or exactly speaking, the graph should be something like not start from 0, start from somewhere here ऐसे. Then ऐसे होगा. यहाँ पे it should extend until infinity. Exactly speaking, that it should. That's how it should be. T is equal to 0 पे flux need not be 0. ठीक है? समझ आ रहा है ना? B proportional to 1 by 2 क्यों ना direct proportionality मिलेगा, नहीं मिलेगा, but x will depend on time. X जो है it will depend on time. X मतलब दोनों के बीच में distance है ना, the bar magnet and the coil. X जो है it will obviously depend on time, right? When t is equal to 0, flux is infinity. ऐसे कैसे? T is equal to 0,
तो x infinity कैसे हो गया?